The more they talk about me, it is helping me. विकास के साथ साथ में धर्म भी मुद्दा है, क्योंकि तो क्या इसलिए आप यहाँ पे जीतते हो? देखिए जैसा एमआईएम वाले जीते वैसे ही मैं भी जीता हूँ. Mr. Modi, Amit Shah comes, Asauddin Owaisi. Rahul and Priyanka comes, Asauddin Owaisi. So we have a slang saying in Hyderabad कि हम मैं इन सबका दूल्हा भाई हूँ. तो चाय वाला हो तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि किसको आप वोट दे रहे हो. चाहिए आप चाय वाला बोल तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि चाय वाला किधर जाएंगे. There are 24 seats up for grabs in Hyderabad, 9 of which is from where I am, the old city, old Hyderabad. Behind me is the iconic Charminar. And if you look around me, massive crowds, the same hustle bustle of shopping areas. Nothing's changed here for decades. So in that case, what really is the definition of development for the people of old Hyderabad? What are the issues that matter? Do they vote on development or do they vote on religion? The city of Hyderabad, defined by these lanes, steeped in history and culture and seen centuries of political change. And here, the fight for power could just decide the ruler of Telangana as the margins become closer. We walk through the narrow, small lanes of old Hyderabad, where it seems nothing has changed. Cars can just about squeeze through these cramped streets, now filled with political noise. किसको वोट देंगे? मैं मैडम जय कांग्रेस को दूंगा. मैडम कांग्रेस. तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, क्यों? कांग्रेस अच्छी चीज़ है, गरीब को समझती है, लेके चलती है, हर एक चीज़ रेट भी कम होता है इसमें. हम कांग्रेस को डालेंगे. अभी आपके सीट में कौन एमएलए है? किसके पार्टी से? है शेख अकबर मलकपेट से. किसके, कौन सी पार्टी? कांग्रेस. कांग्रेस का है? जी. तो उनको ही वोट देंगे? मैं उनको ही वोट दूंगा. मैं फैमिली नंबर से उनको ही दिला दूंगा. ये एमआईएम को नहीं देंगे? ये एमआईएम को नहीं. बहुत डाल दिए मैडम, बहुत कुछ कर लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है. हमारा जो काम है तो हम लाइन में ठहरना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है. साहब नहीं है, वो नहीं है, फायदा नहीं है कुछ कर. असदुद्दीन ओवैसी आपके एमपी है? हाँ. इससे कुछ काम नहीं? कुछ काम नहीं. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. जय कांग्रेस इट इज. लेट्स गो इनसाइड, फाइंड आउट. नमस्ते, आपकी शॉप है ये? आप किसको कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हो? एमआईएम को करेंगे मैडम. एमआईएम. एमआईएम हाँ. क्यों? क्योंकि एमआईएम ही है वहाँ पर. आपके एमएलए शायद कांग्रेस का है अभी? अभी नहीं. कौन है एमएलए वहाँ पर? एमएलए उन्हें एमआईएम का है. अच्छा, तो अच्छा काम कर रहा है. हाँ, अच्छा काम कर. याकुतपुरा डिवीजन से है मैडम. मेरा तो याकुतपुरा डिवीजन से रहते हो. जो याकुतपुरा डिवीजन से रहते हो, हम तो यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह. हम तो हमारे घर वाले जो बोलेंगे वहाँ पे देंगे हम. लाइव. So they're saying that they will choose MIM. आप सब बात कर लीजिए, क्या है आपके लिए मुद्दा? बोलो जी. एमआईएम जीती तो बस है. क्यों? क्या दिया है MIM आपको? हाँ, बस सपोर्ट अच्छा है ना मुसलमानों को. क्या क्या? बलाला साहब जब तक रहेंगे बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है. एमआईएम तो फुल सपोर्ट है हमारे को. तो हमेशा एमआईएम आना, एमआईएम ही चाहना. अच्छा, आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि क्या आप सब MIM को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपके धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? उसी वजह से. काम भी अच्छा है और मुस्लिम सपोर्ट भी रहता हम लोग. मुस्लिम सपोर्ट करते हैं. अच्छा, तो उसकी वजह से आप भी आ जाइए. आप बताइए कि क्या एग्जैक्टली. तो आप बोल रहे हो कि आप इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि आपके रिप्रेजेंट करते हो मुस्लिमों को. अच्छा काम होता है, जैसा कि रोड हर तरफ, रोड हर काम कर देते, बगैर बोले काम कर देते, इसलिए कैसे. वैसे तो आप आ जाइए. वैसे तो मैं पुराने हैदराबाद से अभी काफ़ी मतलब ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे को लग रहा था कि उतना विकास नहीं हुआ है. आप सबको विकास हुआ है लग रहा है? हाँ, लग रहा है. यस, लग रहा है. कैसे? सपोर्ट है पूरा. नहीं, कौन सा, कैसे विकास हुआ है? देना. विकास कैसे हुआ है पता नहीं. अच्छा, आप बताइए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे विकास हुआ है? विकास तो हुआ है मैडम थोड़ा सा. अभी सेंट्रल से तो कांग्रेस आएंगे मैडम. सेंट्रल से. अच्छा, तो तेलंगाना पूरे में आपको कांग्रेस चाहिए? तेलंगाना में नहीं, सेंट्रल से. सेंटर में कांग्रेस चाहिए. अच्छा, और यहाँ पे तेलंगाना में बीआरएस चाहिए? हाँ, बीआरएस भी अच्छा है. बीआरएस ठीक है, केसीआर ठीक है. हाँ, ठीक है. लेकिन आप बताइए मेरे को कि क्या हुआ है यहाँ पे, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
यहाँ पर तो बहुत कुछ हुआ मैडम, क्या क्या मुझे बताएंगे वो? तकरीबन हाँ तकरीबन काम हुआ। तकरीबन यहाँ के रोड के जो है बहुत रोडा आखिरी ख़राब थी। जो रिसेंटली थोड़े दिन पहले आके बलाला साहब यहाँ पे आके काम कराए समझो। जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलहमदिल्ला कराए हैं यहाँ के जो भी है MLA जो आप इंशाल्लाह आगे भी चल के करेंगे इंशाल्लाह। रात सो के उठे तो सुबह मालूम हो जाती हाँ यहाँ रोड दल गई, बलाला साहब कर दिए काम बोल के बोलते। बलाला साहब कर दिए काम पूरे रोडा, शाम में सो के सुबह उठते कि हाँ रोड दल गई। So they're happy essentially with the AIMIM. Some voices here saying Congress also, but in old Hyderabad, essentially the message is this: that look, we will vote for who represents us, who represents our vote bank, and that's become the number one issue. You heard them directly say that to me as well. The AIMIM is clearly popular here, as the voters themselves say, because of the Muslim factor. AIMIM has fielded 9 candidates as compared to 7 last time, but all within Hyderabad. We scoured through the lanes of Malakpet trying to find AIMIM chief and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi, and finally spot him going door to door appealing to people of all ages to vote for the kite, the AIMIM symbol. आप तमाम से गुजारिश है मंदिर को देकर कामयाब करिए। 30 नवंबर के वालेकुम भाई, आप तमाम से अपील है मंदिर को देकर कामयाब करिए। 30 नवंबर के दिन पतंग का निशान, 30 नवंबर के दिन मंदिर को देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान है। उन्हें आप आई भी कहें। Owaisi for the last many days has been campaigning for his party candidates, from road shows to rallies to these personal one-on-one campaigns. अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से गुजारिश है 30 नवंबर के दिन मल्लिस को देकर कामयाब करिए। I have with me Mr. Asaduddin Owaisi, and I've been following his rally across the streets of old Hyderabad here. Very interesting to see, Mr. Owaisi, the kind of reception you've been getting here on ground. Now, the parts of Telangana that I've travelled to, it's clear that this is going to be a close contest. So many are saying that perhaps the 24 seats in Hyderabad could decide who has the keys to the Secretariat. Do you agree with that? No, I don't agree. I agree that every vote is very important. Every elector is important, and you have to win their confidence. Secondly, within the Greater Hyderabad Municipal Corporation, there are 24 assembly segments, which you have rightly said. In the last Greater Hyderabad Municipal Corporation election that was held, the Congress party could hardly win one municipal corporation seat. So within the GHMC, I don't see any Congress traction over here. But we don't know what's going to happen. But yes, as far as we are concerned, we are fighting 9 assembly seats within the 24 GHMC limits. And hopefully, inshallah, we'll be able to win all of them. Why did you choose these particular 9 seats, and why did you choose to stay within Hyderabad? No, it is a party decision, and we thought that we should contest. Last time we contested 8 seats. So this time we are contesting Jubilee Hills, because within Jubilee Hills, in the last municipal election of GHMC, we have won the Sheikhpet division, which is the biggest division of that particular constituency, for the second time. And the 2-time corporator is now the candidate from Sheikhpet. And we have won one Eragada seat for 3 times. And the other 2 municipal corporation seats, we got a substantial number of votes from there. So that was one reason that we should contest Jubilee Hills Assembly constituency. And the remaining 110, yes, we had a discussion about many assembly segments, but we decided that we'll stick to 9 and put all our energies and focus over here. And the remaining 110, we would request the people of Telangana to make KCR the Chief Minister for the 3rd time. In the old city where we are right now, and I remember coming here a couple of years ago, it looks exactly the same, Mr. Owaisi. So there are questions about what really is development here. When KTR says a Gosha Mahal can become a Gachibowli, do you agree with that? Do you think that that's how development should be seen? No, I don't know what you mean. It remains the same. I mean that maybe when I came here to this area itself, the traffic is the same, the roads are the same, the infrastructure is... But you come from Delhi, do you see pollution over here? That I agree very much. But I see garbage on the streets, sir. See, you don't see pollution, you don't see communal pollution.
Hyderabad has been peaceful for 9.5 years. There has been no communal riot, alhamdulillah. All the religious festivals have passed off peacefully. And if you talk about development, let me give you government data of what we have done. The largest number of drain work, we had a deluge 3 years ago, has been done in my constituency. Other assembly constituencies could not do. In my assembly parliament constituency, we have opened 82 basti dawakhanas. Now, again, I would request you to please look into it. Now, every assembly constituency of within my parliament constituency, for example, there are some schemes of the government: post-matric, tuition reimbursements, CM overseas scholarship, Shadi Mubarak, Temris, honorarium to Imam, Mosams, Asra pensions. In, for example, Yaqutpura, 1,81,941 beneficiaries. What is the amount spent? 628.42 crores. Now, this is Yaqutpura. Now, let me come to Karwan. Same scheme, 62,517 beneficiaries. Amount spent 406.32 crores. You come to Nampalli, where we had an MLA. Same schemes, 1,05,097 beneficiaries. Amount spent 423.75 crores. I am not talking about the stormwater drains, laying of sewerage lines, road widening, creation of electric substations. That is another part. I'm talking about only government schemes. Now, I have always requested my political opponents to prove me wrong by filing an RT application. You see, RT applications, truth is there. If I can make bombastic claims, they never do that. No, but my question is, why can't old city become new city? No, why should it become new city? You see, this place has its own charm and aura. Now, unfortunately for people like you, you want to see high-rise buildings everywhere. So that's No, not listen, let me complete. We don't want that. And you know this, in this constituency, an IT tower is coming worth 1,000 crores within this constituency of Malakpet. In 2 years it will be completed. Now the amount of startups which you are seeing in Telangana, the amount of software industries which we have here, will immensely benefit. Now please tell me which city wherein you have a huge population of minorities and IT tower is coming up. No, you cannot give me an example anywhere else. It is coming up here. So when you say that development is happening, I am always saying, yes, traffic is a problem. We have to solve it. For that, many road winding works have been taken up, are in the pipeline. But if everyone wants to have that glamorous high rises like you have in Delhi or in high-tech city, I'm not against it. But you see, every place has its own speciality. We have been able to renovate all these old commands which were there in Old City. Charminar pedestrian work is going on. So some Usmania Hospital building has to be constructed again. Yes, there are some work to be done, but one cannot say that, oh, nothing is happening. I am challenging. Please file an RT application, you'll get an answer, and then come and question me. Okay, so Gosha Mahal into Gachibowli. Would you agree with that kind of, thinking, or do you see that kind of a vision? Well, you see, who's the MLA of Gosha Mahal? Raja Singh. No? Then you ask him. I will. No. See, you ask him. And at the same time, the amount of MP funds I have used in that constituency to have new sewerage lines, that's the biggest problem over there. Sewerage lines and water lines. You can please check. But it is the person who's heading the assembly constituency should be able to answer you. Unfortunately, the moment you ask development, Hindutva comes out. You ask about sewerage line, he says Atangwadi. I cannot help if one has this mindset. Okay, so we will put those questions to Mr. Raja Singh. I promise to do that. Two questions on what's happening right now in Telangana politics. One on the BJP manifesto making a reference to uniform civil code. What's your response to that? Amit Shah I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi to please go to Adilabad district, the old Adilabad district, the old Khammam district, the old Warangal district.
which are full of proud Adivasis. Please say this and see what reaction you'll get. Why do you sit in Hyderabad and say this? Mr. Amit Shah should go and shout from his, top of his voice in Adilabad. In fact, Khanamate or both, full of tribals. Go to Mahbubabad or Khammam and say, and you'll see the reaction, the result which will come out over there. Please go and say over there. Why say it in Hyderabad? You go and say over there. Okay. And finally, Priyanka Gandhi saying that there's a natu-natu between you, the AIMIM, the BRS and the BJP. You see, if you ask any of them over here, what is Teen Mar in Hyderabad? Teen Mar किसको बोलते हैं आप? हैदराबादी बर्फा नहीं, Teen Mar किसको बोलते हैं? So Priyanka Gandhi should tell us what is this Teen Mar. That is, how is it that her husband has been given a clean sheet by BJP? Should I also make this claim? Your brother lost in Amethi. I was not there. What was the deal between your brother and Smriti Irani? You were in charge of 402 assembly seats. How many seats could you win? One. So did you struck a deal with Yogi Adityanath? Please. And then she says, oh, I'm contesting 9 to help KCR. Who are you to ask me how many seats I contest or not? And then she says, oh, I contested so many seats, this place, that place. There is no clarity in their minds. They are full of confusion. And what that tells to the people of Telangana is that these are the people who believe in entitlement. Because we come from a Nehru lineage. So we are entitled to come and sermonize everyone. We don't accept your sermonization. You have lost many elections. And it is because of your incapability and incapacity that Mr. Modi has become the Prime Minister twice. He is not the Prime Minister because of Asauddin Owaisi. Because you could not defeat him in 480 odd seats. He is the Prime Minister. So you should first introspect, show some humbleness, forget about your own entitlement, and talk some sense. Because the way you are talking, you are exposing badly to the people of Telangana, and I am thankful to them. The more they talk about me, it is helping me. Please go ahead, talk about me, because they have nothing to talk. Mr. Modi, Amit Shah comes, Asauddin Owaisi. Rahul and Priyanka comes, Asauddin Owaisi. So we have a slang saying in Hyderabad कि मैं इन सबका दूल्हा भाई हूँ. While old Hyderabad is dominated by Muslim MLAs, there's one man who's bucked that trend. I'm standing, believe it or not, in the heart of Hyderabad. In old Hyderabad resides the seat of Gosha Mahal. A very curious and interesting political case study, because here the demographic is very, very different from the rest of old Hyderabad. And that perhaps explains the BJP's popularity here. And maybe more than the BJP is the factor of T. Raja Singh. You can't deny the fact that in old Hyderabad, religion matters. Voting happens on those cards. And seeing the demographic around me, largely people who've settled, largely a Marwadi population that settled here in Gosha Mahal, it kind of answers questions as to how the BJP still has a holding here in Gosha Mahal and why they chose to give their ticket to Raja Singh, someone who's been suspended from the party previously for making controversial remarks. BJP's T. Raja Singh, suspended first and now back in action. He's got Gosha Mahal constituency in a firm grip and seems all poised for a hat-trick, at least going by the locals we spoke to. तो चाय वाला हो तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि किसको आप वोट दे रहे हो? चाहिए आप चाय वाला हो तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि चाय वाला किधर जाएगा. With a massive North Indian population here, particularly from the Marwadi community, the agenda is quite clear. Vote for BJP. Cows line the roads, goshalas and temples on either side. A stark contrast to other parts of old Hyderabad. Women here too are clear about who they'll vote for. आप बताइए आप किसको वोट देने वाले हैं? क्यों? हम बीजेपी को ही देते हैं. लेकिन आपको पता है ना कि तेलंगाना में बीजेपी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. स्ट्रॉन्ग नहीं है तो
ऐसा तो हमें पॉलिटिक्स का मालूम नहीं है, पर हम राजा सिंह को ही वोट देंगे। राजा सिंह के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके लिए मुद्दे क्या है यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट, क्या देखना चाहते हैं? सब ये रास्ते विस्ते सुधारना, पानी और का ये सब अच्छा करना, सिटी को अच्छा करना, और क्या मतलब है, यही चाहिए। और क्या आप धर्म के नाम पे आप वोट दे रहे हो, इसलिए आप बीजेपी को? और का कुछ नहीं है वैसा। तो फिर क्योंकि उनके काम अच्छा लगता है, क्या है, क्यों है? काम अच्छे लगते बोल के। किसको वोट देंगे बताइए? राजा सिंह को देंगे। राजा सिंह को, क्यों? ऐसे ही हमारा ठेठू से हिंदू धर्म। नहीं, आपके लिए काम किया है या इसलिए क्योंकि आप बीजेपी के लिए वोट करते हैं? हम ठेठू से पैदा हुआ है, जब से वैसे ही चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, तो आपको बीजेपी को वोट देना है? वहाँ से हमारा परिवार ही पूरा 150 हुई है। अच्छा। We then moved towards MLA Raja Singh's home. Nestled deep inside Gosha Mahal, Raja Singh's residence blends with the many buildings in the lane. A humble abode that stood the test of time. राजा सिंह जी, आप पहले ये बताइए कि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हम बात किए थे, सब बोल रहे थे कि राजा सिंह जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। आपको क्या लगता है, आपके लिए वोट दे रहे हैं या मोदी जी की वोट दे रहे हैं? देखिए, तेलंगाना में 2014 हो या 2018 हो, तेलंगाना की जनता ने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री केसीआर जी जिस प्रकार से आज जो राजनीति कर रहे, जो घटिया राजनीति कर रहे, जिसके कारण आने वाले समय में आज 5 लाख करोड़ का कर्जा तेलंगाना पे हो गया है। अगर उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और वही उन्होंने पॉलिटिक्स करेंगे तो मैं समझता हूँ 10 लाख करोड़ तक कर्जा हो सकता है। और तेलंगाना की जनता मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी का कार्य देखकर बहुत प्रभावित है तेलंगाना की जनता। क्या लोगों यहाँ पे वोट धर्म पे दे रहे हैं? देखिए, लोग धर्म पे नहीं, दो लोग विकास पे दे रहे हैं। जैसे आज मेरी गोशामहल विधानसभा में लगभग 9 वर्षों में मैंने 502 करोड़ रुपए का विकास किया है। ऑपोजिशन में रहकर विधानसभा में जब जब मुझे मौका मिलता था, मेरी गोशामहल विधानसभा के विकास के लिए मैं बात करता था, फंड के लिए मैं बात करता था, और यानी विधानसभा में सबसे ज़्यादा फाइट करने वाला मैं हूं। तो इसलिए सरकार जो सो भाई इनसे फाइट हम नहीं कर सकते, कि जो पूछे वो दे दो। तो उस प्रकार से हमने लगभग 9 वर्षों में 502 करोड़ का विकास के लिए फंड लिया है। सीसी रोड हो, ड्रेनेज हो और ब्रिजेस हो, ऐसा हमने बहुत मेहनत करके काम तो किया है। ओवैसी साहब से मैं बात कर रही थी पहले, आपके मतलब इस जगह के एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और बोल रहे थे कि गोशा महल में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप एमएलए है। तो आप भी तो, और ड्रेनेज के बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे पूछ लो उनसे कि ड्रेनेज का काम हुआ है कि नहीं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहूंगा, आपका ये पार्लियामेंट क्षेत्र है, आपके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आपके एमएलएस के समक्ष, उनके सामने पूरे हैदराबाद को डल्लास करूंगा, जैसे न्यू सिटी है, बंजारल है, हाँ, उस प्रकार से हाईटेक सिटी, उस प्रकार से मैं पुराने शहर को डेवलपमेंट करूंगा बोलकर विधानसभा में उन्होंने ये वादा किया था। हजारों करोड़ रुपए में लगाऊंगा विकास के लिए उन्होंने कहा था। आज यथाशक्ति हमने लगभग 35 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रेनेज के लिए हमने लगाए हैं, और मेरी विधानसभा में अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होना है तो लगभग 600 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट बना के रखा है। 600 करोड़ रुपए। क्योंकि लेकिन राजा सिंह जी, मैं इतनी बोलूंगी, मेरी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकता है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक है या और काम करना है? नहीं, अभी बहुत काम करना है। जैसे आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रोड्स है। जैसे आप मेन रोड अगर देखेंगे, वहाँ पर रोड वाइंडिंग के लिए हमने पूरा मैप बना के रखा था, और उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। क्योंकि कोई भी अपना अगर लैंड देना है रोड वाइंडिंग के लिए तो वो तो कुछ ना कुछ सरकार से पैसा पूछेगा। जो गवर्नमेंट वैल्यू है उससे 2 गुना एक्स्ट्रा पब्लिक जनता पैसे पूछ रहे, जो गवर्नमेंट दे रही है हाँ वहाँ पर। लेकिन मेरी विधानसभा में जब रोड वेंडिंग की बात आई, पूरा प्लान हो गया, सब हो गया, ऑलरेडी मार्क भी कर दिया गया कि इतना आपका घर रोड वेंडिंग में जाएगा।
लेकिन दुर्भाग्य है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सारा पैसा मुख्यमंत्री जी ने उनके दूसरे साइड में लगा दिया है। नहीं, लेकिन सालों पहले आप 2 टर्म का एमएलए हुआ है, अभी हैट्रिक के लिए आप एम कर रहे हो। 2 साल पहले अगर मैं यहाँ पे आई थी और अभी अगर मैं आ जाऊंगी तो उतना कुछ फर्क नहीं मतलब दिखेगा मेरे को। ऐसे ही सेम है, ऐसे ही गली सेम है। तो क्या जैसे केटीआर बोल रहा था गोशा महल को गच्चीबोली बनाएंगे, वो सही है? वो आपकी विजन भी है? बिल्कुल, हमारा भी लक्ष्य है कि मेरा गोशा महल विधानसभा अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुझे जितना फंड देना था सरकार द्वारा उतना फंड नहीं मिल रहा। आज हम केटीआर साहब से पूछते कि हाल ही में उन्होंने 2 दिन 3 पहले आकर बड़ी बातें उन्होंने करके गई है मेरी विधानसभा में कि मैं गोद ले लूंगा। भाई, आपने दूसरी भी विधानसभाओं को गोद लिया था, उसका तो विकास नहीं हुआ। चलो, मेरी विधानसभा को आपने गोद लेने की बात की, अब आपका विधायक ये चुनाव में जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन हमने कई वर्षों से आपको यही फोकस किया था कि मेरी विधानसभा के रोड्स के लिए अगर आप होना है तो यूट्यूब पर विधानसभा में मैंने बात की, सो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। पर्टिकुलर मैंने रोड्स के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए और नालस के लिए, जितने नाले हैं जो पुराने हैं उसके लिए मैंने बार फंड मांगा है। देखिए, जो मेरी विधानसभा है ना, एकदम सिटी है, एकदम सिटी। यानी यहाँ अगर हम रोड भी डालना है तो हमें दिक्कत आएगी, नाला बनाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हर चीज़ का। यानी छोटे गली है, यानी लगभग 40 तो स्लम मेरी विधानसभा में आते हैं। तो इसके लिए मुझे लगभग 2000 करोड़ रुपए का फंड चाहिए मुझे, और हमने एस्टिमेशन करके मुख्यमंत्री को और केटीआर को भी हमने दे चुका है कि हमें इतना फंड चाहिए। लेकिन उन्होंने ये 9 साल में सिर्फ हमें 500 करोड़ रुपए ही दिए। देखिए, एक विधायक हूँ और अपोजिशन में हूँ, अगर हमारी सरकार रहती तो मैं लगभग 5000 करोड़ का डेवलपमेंट कर सकता था। और जो 2 साल पहले जो आए थे आप, वो अब आते तो आपको ये रोड उस प्रकार से नहीं दिखते, अच्छे दिखते थे। तो आपको भी लगता है कि गोशा महल गच्चीबोली होनी चाहिए? 100% गोशा महल गच्चीबोली होनी चाहिए, हाईटेक सिटी होनी चाहिए, बंजारा होनी चाहिए। लेकिन सरकार से निवेदन है, हार जीत तो लगी रहती है। 2 बार से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी देगी। लेकिन मुख्यमंत्री एवं केटीआर से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई, जब चुनाव हो जाता है तो सभी एमएलएस को 2 आंख एक बरोबर देखनी चाहिए। आप ओल्ड सिटी के जो एमआईएम के एमएलएस है वहां पर आप ज्यादा फंड देते हो, और यहाँ पर फंड देने के लिए आप लोग नाटक करते हो। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरी विधानसभा से जाता है, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू। तो पुराना हैदराबाद अगर आप पूरे के पूरे देखेंगे तो काफी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ गोशा महल में नहीं, लेकिन पुराना हैदराबाद पूरे जगह में। फिर भी जितने भी एमएलए जैसे आप हो या एमआईएम के हैं, वही रिटेन करते हैं पावर। इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या विकास मुद्दा नहीं है और क्या धर्म मुद्दा है? देखिए, विकास के साथ साथ में धर्म भी मुद्दा है, क्योंकि तो क्या इसलिए आप यहाँ पे जीतते हो? देखिए, जैसा एमआईएम वाले जीते हैं वैसे ही मैं भी जीतता हूँ। वो लोग भी विकास के ऊपर बात नहीं करते, विकास के ऊपर कोई कार्य नहीं करते। जब कभी भी चुनाव आता है उनके छोटे भाई को भेज देते हैं कि भड़काऊ भाषण देने के लिए। अभी तो हसदुद्दीन ओवैसी भी भड़काऊ भाषण देना स्टार्ट कर दिए। तो वो आपके बाद भी वही बोलते हैं। हम तो उनको काउंटर देते हैं। अगर वो हमें काउंटर नहीं देते, हमारे धर्म को वो लोग अगर गाली नहीं देते तो हम क्यों बोले? हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे। अरे, आप लोग हमारी गौ माता को काटना बंद कर दो, हम आपको सर पे बिठाएंगे। भारत माता की जय वंदे मातरम बोलना स्टार्ट कर दो, हम आपको सर पे बिठाएंगे। लेकिन भारत देश का खाकर, भारत देश में राजनीति करके आप बोलेंगे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक बात याद रखना, आपके चैनल के माध्यम से, हसदुद्दीन ओवैसी आपके चैनल को बहुत फॉलो करता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उनके पैर इन्होंने पकड़ के राज किया, टीडीपी की सरकार बनी उनके पैर पकड़ के इन्होंने राज किया। अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस दिन भी हमारे पैर पकड़ने आएंगे तो हम पैर पकड़ने नहीं देंगे। तो बी टीम सी टीम के बारे में कुछ नहीं को ये तो है। देखो, दूध में नमक है, हम दूध है तो वो नमक है। दूध और नमक का कभी संगम नहीं होता, तो वैसे ही बीजेपी और एमआईएम का कभी संगम भविष्य में भी नहीं होगा। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये दोनों भाइयों को हम जहां भी जाना है वहां भी जाएंगे। The old Hyderabad political fight, it's clear, is also being fought on religion. Development, yes, but religion first. For many, the hustle bustle of the old city may be a bit too much to really comprehend. But it's got its own culture, it's got its soul. And as far as voting is concerned, it's anyone's guess as to who will win. But one thing's very, very clear. What matters a whole lot is religion. What matters a whole lot
is the demographic. And that's where the religion of political parties and the candidates truly matter in this fight for Old Hyderabad.